बच्चों को किस तरह ट्रेन करते हैं कि वो एक दूसरे को बुली ना करें? We are trying to educate children about the importance of empathy, the importance of being compassionate. So Yeah. we have counselors in most of our schools Schools. now, सही and है। they are proactively working on हम्म। this issue, the हम्म। bullying issue. टीचर से मिलने जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने जाएं, सो वो बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रूटल हो जाते हैं अबाउट थिंग्स, और उनके दिल Hmm. में वो एम्पैथी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज़ नॉट बीन एबल टू पे द फी, Hmm. सो जिस तरह की बातें, बच्चे को वहाँ से निकाल देना क्लासरूम से, वो जो ह्यूमिलेशन है। सो आप हाउ डू यू सी दिस, और आपने कोई इस पे पॉलिसी बनाई भी है? ये बड़ी मुश्किल चीज़ है और इसके ऊपर हमारी काफ़ी डिबेट होती है. हम्म। Because the last thing one wants to do is that if a parent is unable to pay the fee, the child should have to suffer the consequences. But we try to avoid it in every possible way. जब तक किया जा Okay, सकता है। and we try to encourage parents. So we send out multiple notices, we give people a few chances to pay. We would ultimately speak to the parent. If the parent is not able to or does not wish to continue their child's education at the school, we would encourage them not to then bring the child to the school. But unfortunately, there are situations in which parents do not cooperate, and we've had situations in which parents will often drop the child off outside the school and leave. Now, obviously, we can't leave the child outside the school आउटसाइड gate. स्कूल, ऑफ कोर्स। So then one has to come up with, some kind of a way to handle the situation. So ये case to case vary करता है. कोई एक I can't say to you कि एक set policy है. ठीक है, पर case आप उसमें कोशिश ये करते हैं कि जितनी कंपनसेशन हो सकती है वो कर हम दी इसको जाए। हम कॉन्स्टेंटली अपने हेड्स के साथ बात कर रही होती हैं कि इन सिचुएशंस को एम्पथी के साथ हैंडल करना है. सही है। बिकॉज nobody would want their kid to be in that kind of situation or to be humiliated in front of the other children. So I'm sure that people who are listening to it, some people might feel they may not agree with me, or they might have had experiences which do not align with what I am saying, which is why I am stressing that it is something that we try to handle with as much empathy as possible. But you have to understand at the end of the day, we don't yet have AI teachers or robots in every school. They're all human beings, and everybody has different ways of dealing with things. Some people are more compassionate and more empathetic, and other people might be a little bit more let's say abrupt in dealing with situations. पर आई थिंक आज जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो आपके ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको एक चीज़ की खुशी तो ये होगी कि लीडरशिप किस तरह सोचती है। बिकॉज जितनी भी चीज़ें आती हैं, मैंने ये जो आपके बिहेवियरल इश्यूज हैं, अगर आप सॉर्टेड हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इसका। सो आई थिंक अगर आपके अंदर एम्पैथी है, बिकॉज आई हैव आस्क्ड दिस टू डिफरेंट एजुकेशनिस्ट, उनका सवाल जवाब फर्क था। वैसे बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, हमने इसको बिजनेस के तौर पे ही रन करना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। बुलिंग जो है बहुत ज़्यादा एक इशू है, बॉडी शेमिंग है या डिफरेंट तरीके से। Hmm. सो हाउ डू यू कोप अप विद दिस, या किसी पॉलिसी क्या है, या टीचर्स को किस तरह इक्विप करते हैं, बच्चों को किस तरह ट्रेन करते हैं कि वो एक दूसरे को बुली ना करें? यार इसके ऊपर तो आपको एक सेपरेट पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक डिस्कशन है, है। डिस्कशन है, बिकॉज दिस इज देन कनेक्टेड टू इमोशनल वेल बीइंग एंड हम्म। कनेक्टेड टू डिग्निटी एंड कनेक्टेड टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी डू एट आवर schools. हम्म। Bullying is definitely an issue at all schools. मैं बीकन हाउस की नहीं बात नहीं, नहीं एट कर ऑल रहा. स्कूल्स, या And it has become worse because since the advent of the internet, सही है। because now there is cyberbullying as well. राइट। People can bully anonymously behind the safety of their computer screen without even revealing their हमारे साथ name. होती है सर। Yeah. एनॉमनसली हमें आगे कोई गाली देगा, कोई वो रोस्ट कर देगा, कोई वीडियो या लगा देगा। या सो हाँ, लेट्स से कोई फेसबुक के ऊपर कोई रैंडम ट्रोल अकाउंट आपके बारे में कोई कुछ चीज़ भी लिख बकवास देता है, करा। ठीक है ना. तो ये हाँ, बच्चों के साथ भी होता है, होता सिर्फ है। हम्म। doesn't just happen with us. हम्म। So we are very, very particular about it. Okay. We encourage children to speak to their teachers and सही to है। speak to the administrators. हम्म। We are trying to educate children about the importance of empathy, the importance of being compassionate. We started many years ago, कोई I don't know 15 साल हो गए हैं.
we started working with this organization called Global Dignity, which is which teaches kids about dignity of everyone. सही And है. obviously, the worst way to impact somebody's dignity negatively is by bullying or harassing them. So global dignity के साथ भी हम काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं. और ये हमने आपके स्कूल्स में इनके रिप्रेजेंटेटिव कुछ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, किस तरीके से? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. It's an international organization, so they सही don't है. have representatives as such in our schools. तो टॉक्स Uh, वगैरह होती हैं. Yeah, so we've integrated a lot of their programs into our schools. We even have a Global Dignity Day every October at our schools. This was set up by the Crown Prince of Norway, ओके. and I was associated with World Economic Forum, and I was on one of their bodies. So this gentleman, Prince Haakon, who's the Crown Prince of Norway, he asked me to be involved with this and to implement it at our schools in Pakistan. So that's how it started. And it's now become part of the DNA of Beacon House. Shuru mein to we only used to do Global Dignity Day in October, but now we do activities throughout the year. Even with the support staff, we want children to treat them. We want them to Nicely. understand that, whether somebody is a janitor or they are your principal, it doesn't matter. You have to treat everybody with dignity. Very Everybody nice. has the right to be treated with dignity. Similarly, you have to treat each other with dignity and with respect. We've also, in the last few years, made a big investment in terms of people and money on emotional well-being. सही So है. we have counselors in most of our schools Schools. now, सही and है. they are proactively working on Mm. this issue, the Mm. bullying issue, or talking to children, trying to make sure it doesn't happen in the first place. But the reality is that it's something which has been happening since time immemorial, in the workplace, in schools, in the professional field. So Everywhere. 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 So, but yeah, it's something that we do take very, very Seriously. seriously.